To start with, in this 11th OCM lecture, I'll just try to give a brief about me first, a brief introduction, क्योंकि ये तो कम से कम पता चलना चाहिए कि हमें पढ़ा कौन रहा है। नाम पता होना काफी नहीं होता है। You need to learn, you need to know what that person is also. Myself, CA Manish B. Tardeja. I am a chartered accountant for last 17 years. 2003 was the year when I completed my CA course. Since then, in fact, before that itself, till date, I've been teaching. It's been around 18 years that I've been teaching. I've taught variety of the subjects, ranging from the income tax, auditing, service tax, the taxation subject as such for the CA intermediate level. Auditing, I've talked about management accounting in different colleges. I used to be the visiting faculty at multiple colleges like BMCC, Garware, SP College. And then I was a full-time teacher at full-time faculty at Midcon Institute of Management, Balewadi. So that's a brief introduction about me. What I'm going to talk about, what I'm going to discuss is the subject of organization of commerce and management. When I'd written the message in your group, at that time I had written one point, that this is one of the fantastic subject. This is one of the core subject which is to be learned from the practical point of view. Why I said so, why I had written that, the very simple and basic reason behind that is, when you talk about a subject from the theoretical point of view, अगर मुझे सिर्फ टेक्स्ट पढ़ाना है, उसको याद करवाना है, रट्टा मरवाना है और तुम जाके एग्जाम में टूट पड़ो and you write something like this, you never understand what that subject is all about. To be very frank with with you all, my dear friends, my 11th and 12th, even I was in commerce. I'm basically from Amravati, a place near Nagpur. Many of them don't know about it. From this place, when I did my 11th and 12th, at that time, I was not going to the colleges. I never visited college, or I visited very rarely. There were very limited circumstances when I would go to the college for my 11th and 12th standard. तुम लोग बोलोगे सर हम भी नहीं जाते। हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे पता है अच्छी तरह से कि तुम भी नहीं जाते हो। तो when I was doing that, at that time I had been to the college, I think once in a while. Someone told me that OCM subject, you have to just by heart the things and you have to write the paper word to word, verbatim. हम लोग 12th में आ गए थे, 12th स्टैंडर्ड में, तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कंपटीशन लगाई थी। हम लोग को 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन का एक डाइजेस्ट आता है 11th 12th कॉमर्स के लिए। तो उसने कहा वो 21 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन, वो 21 जो होता है वो लेके आए और उसमें से कहने लगा कि आप हम लोग इसमें से क्वेश्चन रट्टा मारेंगे, देखते हैं किसका पहले रट्टा मारा जाता है। करीब करीब 2 घंटे हो गए, मेरा एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इस बंदे के 4 क्वेश्चन हो गए। मैंने जब उससे सवाल पूछना चालू किया तो वो वर्बेटिम एज इट इज बता रहा था मुझे। And when he asked me something, I could not go ahead with the half of the paragraph also. Why? Because it has never been my habit. It has never been my system to do the studies on Ratta Maro theory. That's not a possibility for me at all. Why? क्योंकि बाय हार्ट करके शायद उस समय के लिए याद हो जाए, शायद एग्जाम के पहले हम लोग रिवाइज कर लें और एग्जाम में जाके लिख भी लें, पर उसमें लिखा क्या था ये पता नहीं चलता है। या फिर हम लोग एग्जाम हॉल में वो पेपर लिखने गए हैं और पेपर लिखते लिखते अगर वो सेंटेंस का हम लोग जो कंजक्टिंग वर्ड होते हैं ना, इज, आर, इफ, दैट वगैरह वगैरह, ये भी अगर भूल जाए तो वी फॉरगेट द होल ऑफ द रिमेनिंग आंसर. That happens. You must have had the experience up till your 10th standard. Your teachers up till 10th standard would tell you that you have to learn by heart it. And that's the wrong process.
Why I'm saying so? I'm very frank and clear on that front, because I know when I'm talking about something, I have to talk about it in the conceptual form. I have to talk from the perspective of the clear cut understanding point of view. अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही है और मैंने उसका रट्टा मारा है, तो उस चीज का मेरी जिंदगी में कोई भी उपयोग नहीं है. But if I have understood the concept correctly, if I have understood the right thing in a proper manner, in that case, in such situation, I will be able to write it at any point in time that you want and in any situation that you want. At least I'll be able to write something which will capture some part of that particular answer. And that's the kind of thing that I believe in. That's the kind of thing that I am going to talk about. That is the way we are going to talk about this subject of OCM also. Because mind well, my dear friends, आपकी life of education does not get over at your 11th and 12th standard. Your life of education professionally actually starts after your 12th standard. फिर चाहे आप वो कोई भी professional course कर लो, whether you take the example of OCM, whether you take the example of CA, CS, MBA, whatsoever you want to. I'm not going to restrict you. I'm not going to ask you that you should be doing X course and not the Y course, you should do Y course and not the Z course. I'm not going to say something like this. That's not my intention at all. My intention is whatsoever professional course you do, you will be having the mammoth of the syllabus to be covered at that point in time. How will you be capturing that syllabus at that time? तुम क्या चिट्ठियां बना के लेके जाओगे रिडक्शन करके? वो जेरोक्स वाले के पास जाएंगे, भैया इसका रिडक्शन करके, तो फिर चिट्ठियां कोई पैर पे चिपका रहा है, कोई मुंह पे चिपका रहा है, कोई गले में चिपका रहा है, और फिर जैसे एग्जाम आती है कौन सी वाली चिट्ठी कहाँ है निकालो और पढ़ के लिखो. That's not possible. You cannot pass something like this, and especially you cannot become a professional like that. In no way it is possible. तो वहां के लिए आपको, जब आप अपने प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हो, when you start doing the studies at your professional level, at that time you have no option but to do the studies from the conceptual point of view. And mind well, your subject of OCM is one of the most practical subject, I can say. I am damn sure on that point. It has to be the most practical subject. I am saying practical. सर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, इसमें तो एक भी जगह नंबर्स नहीं है. A subject without figures, how it can be practical? हर चीज जो प्रैक्टिकल होती है उसमें फिगर्स का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी नहीं होता है. Figures I mean to say with numbers. Don't try to misinterpret that. You are the grown-up kids now, so I need to use the things very much rationally, you know. So when I'm talking about the practical subjects, that's a different thing. Practical subject में एक बार आपको अकाउंट्स में, सपोज आपको जर्नल एंट्री का कंसेप्ट पता चल गया, उस जर्नल एंट्री को आगे चल के कैसे पास करना है वो आप गोल्डन रूल अप्लाई करके ही करते हो. Then and only then your answer is correct. The same thing is what you are supposed to do here. The same way is what we are going to do in the subject of OCM also. Because if I have to talk about the subject, I have to talk from that practical point of view. I have to talk from the practical implications point of view. You know what is this? Sir, बड़ा ज़्यादा practical कर रहे हो सर. अचानक वो पप्पू की याद आ रही है हमको. पप्पू हमारे देश का बेटा, नेशनल चाइल्ड राहुल गांधी. Everyone knows about him, no? वो भाई साहब जब भी कोई पर्टिकुलर कहानी बताते हैं, तो उसमें कोई एक पर्टिकुलर वर्ड होता है जो 50 बार कम से कम रिपीट करते हैं. So what is this practical all about? Now I'll just come to the part of your syllabus first. Now आलू की फैक्ट्री बोलो या मीन की फैक्ट्री बोलो, either which way it is correct. No?
I would be interested to bring in the various topics which are applicable for your exam. Let's have a discussion through that how these are applicable from your point of view, from your practical point of view. That's what we have to talk about. Like, take for example the very first in that, the index. If you look at it, तुम कहोगे सर सिर्फ 8 तो चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर पढ़ने में, खत्म करने में हमको समय कितना लगेगा, और सब मिला के 168 पढ़ने हैं, हम तो जनवरी में स्टार्ट करेंगे. That's what people think, you know. I'm very much sure that even some of you must be thinking of this kind कि जाने दो यार, अभी से ओसीएम पढ़ के क्या फायदा, जब एग्जाम आएगी तब 2 महीने पहले, क्योंकि सीनियर्स ने कहा हुआ है 1 महीना पहले ओसीएम पढ़ो, खत्म करो, एंड बाय दैट वे इट हैपेंस. हो जाता है, मैं सीरियसली कहूं, हो जाता है. ओसीएम 1 महीना अगर लगातार बंदा रोज 2-2 घंटे पढ़ाई करे ना, 2 घंटे रोज सिर्फ 1 महीना, 60 आवर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, it is seriously possible, absolutely possible. I'm damn sure about that. भेजता हूं ग्रुप पे भेजता हूं पीडीएफ. पर हम लोग जब ओसीएम सब्जेक्ट्स खुद पढ़ने बैठते हैं ना, हम लोग जब खुद पढ़ना चालू करते हैं, पन्ना बाय पन्ना, पेज बाय पेज, वो दूसरे पन्ने तक कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है. क्यों? जब मुझे किसी चीज का एप्लीकेशन ना पता हो और मैं उसे थियोरेटिकल एस्पेक्ट से पढ़ने की कोशिश करूं. ये कोई नॉवेल तो है नहीं कि कहानी लिखी है और बढ़िया स्टोरी है, स्टोरी लाइन अच्छी चल रही है तो मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा, राइट? तो इसलिए वो बंदा मतलब इजीली सो जाता है दूसरे पन्ने तक. या थैंक यू आर्या फॉर दैट. whereas if you learn it, if you are understanding it, like take for the very first example, there is a chapter called as Introduction of Commerce and Business. इसमें इन्होंने प्राइमरीली बात किस किस के बारे में की है? They have discussed about something called as employment, business, profession. कि एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होते हैं, कौन प्रोफेशनल होता है, कौन एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय होने के फायदे नुकसान क्या है, बिजनेस होने के फायदे नुकसान क्या है, प्रॉफिट एज अ मोटिव कैसे होता है. These all things is what they have talked about in that. And yeah, of course, that's the introduction. Economic activities and non-economic activities is the introduction. What we are going to talk about is only the economic activities. ए भाई, तुम मेरे को इतना डिटेल में मत बताओ, मेरे को सब मालूम है, मैं पिछले बहुत साल से पढ़ा रहा है. तुम लोग भी एक एक पन्ना पढ़ पढ़ के मेरे को सिर्फ छाप के दे रहे हो. यहाँ पे क्या क्या बताया सर, इंडस्ट्री भी बोला है सर, प्रोफेशनल भी बोल रहा है सर, बिजनेस. अरे जब मैंने बिजनेस की बात कर ली तो बिजनेस इंक्लूड्स इंडस्ट्री, राइट? हाँ ना, बस तुम लोग सच में एनर्जेटिक हो. आई रियली अप्रिशिएट दैट पॉइंट कि और तो भाई खैर तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि सर लॉकडाउन में पढ़ाई करने का तरीका सीख रहे हैं. बस लॉकडाउन में कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं समझने की कोशिश कर रहे हैं. और बंदे इतनी एनर्जी के साथ में वो वर्ड्स टाइप कर रहे थे, और वो सुपर फास्ट स्पीड जो होती है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल, कहीं मोबाइल ना गिर जाए. एंड सडनली मैंने कहा भाई वो मत लिखो, और बंदे के दिमाग में अचानक से आने लगा, सर एक ही स्टेटमेंट में आपने तो जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, पूरी जिंदगियां बदल दी सर, ऐसे कैसे कर लिया आपने? Isn't it? Well, so the point is that in that particular introductory chapter, yes, they are talking about, they are been writing about, कौन है ये? मीत बाफना बोल रहा है, ओ भाई मारो मुझे मारो, रुक रुक, मैं घर पे फोन करता है मीत तेरे को मारने के लिए, पर्सनली तेरे पेरेंट्स आएंगे, उनको बड़ी खुशी मिलेगी. चलो कहीं तो इसने खुद होके हमको मौका दिया मारने के लिए. Isn't it? मीत जैन, मीत नहीं, मीत जैन नहीं था, कौन था? मीत बाफना. हाँ, पहले एक गाना आया करता था, पता है? मीत ना मिला रे मन का, ऐसा कुछ तो गाना था. वेल, लेट इट बी.
असो ते काय ना, एकदा जर आपण डिस्ट्रॅक्ट झालो ना, जर विषयाला सोडून जर काही बोललो तर विषय होईल. म्हणून आपण ते लक्ष फक्त आणि फक्त लेक्चरवर देऊया. वेल, कम बॅक. So the point is what? अरे सब चीजें क्या एक ही दिन पे एक्सप्रेस कर दूं, धीरे धीरे सारी चीजें बाहर आएगी, डोंट वरी. The point that I want to highlight is the first part that has been talked about in this particular topic of introduction of commerce. They are talking about what is economic activity, what is non-economic activity. They are talking about business, employment, profit, industry, etc., etc. Now, what do I mean by a business? What are the necessities of a business? When I'm talking about the employment, yes, there they have written the basic characteristics of employment are that you need to be qualified, you need to work under a particular timeline. Arey bhai, kyun? Why is it decided something like that? That's what we have to understand. जब आप बिजनेस की बात करते हो तो इतना अगर बढ़िया है तो भी लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, माय वाइफ हैज अ बिजनेस and the place where she does that particular business activity, उस पर्टिकुलर मार्केट में हमारे पास कुछ 300 दुकानें हैं और इस लॉकडाउन के पीरियड में करीब करीब 15 दुकानें बंद हो गई. They have shut their shop, they have closed it. Why? Because they could not survive, they could not sustain with that lockdown. It was closed for a period of 4 to 5 months. So there is a huge risk involved. Still, why the people are taking the risk? Still, you look at the whole of the surrounding that you have, all the surroundings that you could observe. आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का छोटा मोटा बड़ा बढ़िया बिजनेस दिखाई देगा. They are making profits. Now, are those profits sufficient? Is that money that they are earning sufficient? These are all kind of things that is what we have to talk about. Why still people are interested to do the business even if there is a risk? एम्प्लॉयमेंट में रिस्क नहीं है तो बंदा एम्प्लॉय क्यों नहीं बनना चाहता? नहीं भाई, मैंने किसी की सुनी नहीं है, मैं अपने पापा की नहीं सुनूं तो कहीं जाके काम क्यों करूं? Isn't it? तो वो भी एटीट्यूड होता है. That is also a deciding factor. So there are different aspects that we have to talk from the perspective of practice. Now, when you talk about trade, if I just go into that particular chapter for you, if you can just observe, नहीं तो बंदा वापस से वहां पे हेडिंग लिखना चालू करेगा. मीत, तेरे जज्बात बदले या नहीं? I'll just come to that particular topic. And of course, we'll be talking about that in what method we are going to talk about. The methodology of our discussions, that is also what we are going to talk about. बहुत बड़ा चैप्टर दिख रहा है रे. कितना टाइम मैं स्क्रॉल कर करके थक गया. हाँ, in the trade we are going to talk about what the wholesale trade and the retail trade. Sir, wholesale retail ये हमको बहुत अच्छी तरह से पता है. हम लोग रिटेल दुकान पे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि होलसेल रेट में लगाओ. Isn't it? We are going to talk about the import procedures, export procedures. We are going to talk about how do we import the things, how do we export the things. So what I am interested to talk about is, just 1 minute. What my intention is to discuss is these all things which are there in your syllabus have to be learned from the practical point of view. Now, if you take the example of small scale industry and business, हमारे देश को अगर बड़ा बनना है तो उसके लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि हर एरिया में रिलायंस और जियो मार्ट काम नहीं कर सकता है. रिलायंस और जियो मार्ट को सपोर्ट करने के लिए भी इंडस्ट्री लगती है. हर एरिया में टाटा अंकल आके अपना काम करके देंगे वैसा नहीं होता है. यू हैव टू हैव द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज.
जब रिसेंटली लॉकडाउन हुआ उस समय पे जब सीतारमण मैडम, आप पहचानते हो शायद, our finance minister, this lady brought one of the biggest kind of what they call as the क्या बोलते हैं उसको, package, and that package is called as the SME package. 3 लाख करोड़ रुपए का फंडिंग दिया इन्होंने बैंक्स के लिए, MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, and that's what we are going to talk about in the MSME businesses. Of course, the MSME definition has been changed by Sitaraman madam and on the overall practical point of view, but still in your OCM syllabus, the definition of MSME will still remain the older one. We'll be considering with that. Then एक सवाल ये बनता है कि मैं जो बिजनेस करना चाहता हूं वो मैं बिजनेस ओन करूं, खुद चलाऊं, मतलब सोल प्रोप्राइटर करके चलाऊं, whether I should take someone with me and we should do the partnership, whether my family itself is sufficient, हमारी family बड़ी भरी पूरी है, there are number of people in our family, and whether they should conduct all the family business together, or whether I should incorporate it as a company. These all things is what we are going to talk about in the forms of business organization. That's chapter number 4 and 5. Then the institutes which are supporting the business, like there is an organization called as SIDBI, there is an organization called as NABARD. How do they support the businesses? How do they carry out the business activities? How do they give the funding to the businesses? This is what we are going to talk about in the institutes that support the businesses. Every business is surrounded by the different things, different activities. Like there are the industries, there are the competitors, there are the government. These all affect your business. So how do you survive in that business environment? That's what we are going to talk about in that. And then we'll be talking about the last part is the introduction of management. What we will be doing is we'll be jumping over the topics. Like my normal sequence will be first with chapter number 1 and 2, that will be talking about the introduction to the commerce and business and trade. So after that we'll be talking about chapter 4 and 5. Then we'll directly jump on to chapter 7 and 8, and then we will come back to chapter 3 and chapter 6. अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने ऐसा सीक्वेंस क्यों रखा. बहुत ही सिंपल रीजन है. Chapter 3 and chapter 6 are more kind of self-explanatory chapters. उसमें बहुत कुछ समझाने लायक नहीं है, तो मैं उसमें अपना समय ज्यादा क्यों बर्बाद करूं. मैं उसको बाद में रखूंगा ताकि उसको याद भी रखने को इजी हो जाए, और क्योंकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो उसको फटाफट निपटा दिया जा सकता है. मैं निपटा दिया जा सकता है ऐसा शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि something where you need to understand the details, those have to be given more importance, and that's what I'm going to do. So that will be our sequence of chapters in which we are going to talk about. अब सवाल ये बनता है कि सर आप पढ़ाओगे कैसे? ऐसे ही प्रवचन करते रहोगे दिन भर? आप हमारे सामने आओगे, हम आपके सामने बैठेंगे, हम लोग फिर कहेंगे वाह गुरुदेव वाह, क्या बात कर रहे हैं आप बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा पर बहुत बढ़िया चल रहा है. I'm not going to do something like that. I'm in no ways interested to have the pravachans of OCM. I cannot. When I'm talking about the things, I will be talking from practical point of view, that I'm saying very clearly, but at the same time, I need an interactive class. I need the people to be responding. I need, when I'm explaining something at that time, the people should react, should ask the question wherever there is one. And at the same time, we have to also keep the exams in track. Why? Because जब हम एग्जाम में पेपर लिखने जाएंगे तो हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं पूछा जाता है, वहां पे इंपॉर्टेंस theoretical knowledge को दिया जाता है. I pity this system, but we have no option. We have to do it like that only.
आखिर एग्जामिनर क्या चाहता है, इस चीज का भी ख्याल पूरा पूरा हमको रखना पड़ेगा। और इसीलिए what my methodology of discussion is, sometimes I present it through the PPTs, sometimes I read the text, I try to explain that from the practical point of view, and then we make the different charts over these all. Now, why charts are required? Why charts are necessary? Like, I'll give you a simple example here. If you take this first example of your first chapter itself, within which they are talking about what? The economic activities. Within economic activities, they are talking about business. Now, they have given certain functions, certain features, certain characteristics of business. What are the characteristics? It is an economic activity. It involves two parties. It has profit motive. It has production of goods and services. There is an exchange of goods and services, of course. अब मैंने अगर गुड्स बनाए हैं या गुड्स प्रोक्योर किए, तो ऐसा तो नहीं होगा मैंने गुड्स बनाए और उसके बाद नहीं मैं नहीं बेचूंगा, मैंने नहीं बेचने. I cannot do something like that. I am going to sell it, and against that I am going to get the income. Not necessarily the flow charts only, but together with the kind of charts, in a sense that we call that as mind maps. Now, when I prepare a mind map, now what is this mind map? Mind map is basically a kind of chart which is made on the branches. जैसा हमारा ब्रेन होता है ना, हमारे ब्रेन में कई सारे वेन्स टूट रहे होते हैं, और जब हमारा ब्रेन उस चार्ट को देखता है तो वो रियलाइज करता है, पिक्टोरियल इमेज को रियलाइज करता है, और जैसे ही वो उस पिक्टोरियल इमेज को रियलाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है, तो इमीडिएटली इट कम्स टू द माइंड वेरी फास्टर. In that case, saving and retrieval becomes very fast. Control S, Control C, Control V becomes very fast in that. Control S is save, Control C is copy, Control V is paste. You people understand this much better than me, but still. So these things will help us. So what we will do is we will learn this particular part first. We will go through this characteristics, features of the business. Once we understand that, after that we'll be making the mind map on that, and within that mind map we'll be having the branches which we will be able to recognize at a later date. So that's the second thing that we are going to do in the methodology. First part I said we are going to learn and discuss. Learn and discuss means we have to understand it from the practical point of view, from the theoretical point of view. That we will be doing either through the PPTs or we will be doing it through the textbook. मैं टेक्स्ट पढ़ूंगा, उसी को एक्सप्लेन करूंगा, उसी को इलाबरेट करूंगा. Second thing that I'm going to do for that particular thing, for that particular part, is we are going to make the charts on that. Third thing, क्योंकि तुमने तुम्हारी 10th की एग्जाम लिखी लगभग मार्च के 17 तारीख तक, बराबर. मेरे ख्याल से 18-19 तारीख से लॉकडाउन और ये सब कहानियां स्टार्ट हो गई थी. सीबीएसई वालों ने तो बेचारों ने लास्ट पेपर लिखा और उसके दूसरे दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ. जिस दिन से इनका मूड था, हाँ 21 से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, पर इनका आखिरी पेपर कुछ लोगों का नहीं हुआ. तो सीबीएसई वालों बेचारों ने 18 तारीख को पेपर लिखा और सोचा कि बस कल पार्टी करेंगे, और वो पार्टी गई बूम, उसकी तो लग गई वाट. एंड उस दिन से आज तक घर में ही बैठे हैं. प्लान फेल बेटा, प्लान एब्सोल्युटली फेल, अल्ट्रा फेल हुआ है तुम्हारा प्लान. सिर्फ फेल नहीं हुआ है, ये खुशी मनाओ कि तुम पास हो गए, नहीं तो वहां पे भी कुछ गलत समझ में आ जाता. एनीवेज, सो द पॉइंट इज, आपने लास्ट पेपर लिखा 18 मार्च को, एंड वी आर टुडे ऑन अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली ऑन 26th of August. मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने और लगभग 7 दिन, चलो जाने तो राउंड ऑफ 20 तारीख पकड़ते हैं, 6 दिन. 5 महीने 6 दिन से तुम्हारी ना राइटिंग प्रैक्टिस छूट चुकी है.
सर हम लोग करते हैं सर राइटिंग प्रैक्टिस, आप ऐसा मत बोलो सर, हम लोग रोज एक पन्ना लिखते हैं अगर मन किया तो. And for the subjects like OCM, the subject like economics, the subject like English, what is required is your good writing practice. And for that purpose, I will be giving you the regular assignments in which you will be having the questions related to a particular topic. Of course, that will start once we finish off the particular chapter. I'll be giving you the questions, you have to write the answer, and I'll be giving the hint answers on that. That is how we will be preparing for the subject. And one last point that I will be talking about. तीन चीजें बात की मैंने. पहला, how are we going to discuss it? Second, we are going to prepare the mind maps on everything. Third, we have to do the writing practice. What we are going to do for the writing practice. And fourth, very important thing. That is important, seriously important. मैं पढ़ रहा हूं, मुझे समझ आ गया, पर मुझे जो समझ आया है ये सच वाली समझ है या गलत वाली समझ है, ये समझने के लिए मुझे ये समझना पड़ेगा कि इसे मैंने ठीक से समझा है या नहीं. वो किसी एक मूवी में मैंने सुना था, शायद अमिताभ बच्चन का डायलॉग था कि समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना ही एक समझ है. समझ समझ के समझ को समझो, समझ समझना ही एक समझ है. समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है. All right, this is not a tongue twister, but this is a factual thing. Whether you have understood the thing right or not, whether you have learned the thing properly or not, that has to be tested, that has to be verified, that has to be checked. And for that purpose, we will regularly be having the tests on the subject of OCM also. Sometimes it will be an MCQ based test. Sometimes it will be an objective question test. Sometimes it will be a theoretical test. How are we going to deal with that? Because we are sitting at our respective places, we are not able to meet, but still we have to cope with that. And how do we cope with that? We have a solution for that. Whensoever that situation comes, I'll be talking about that how do you deal with that particular situation when it comes to the subjective questions. All right. So this will be the methodology of our learning and testing. I've talked about the syllabus that we have. The PDF of the OCM book I'll be sharing on the group. I hope you have understood the basics of it. I hope you have understood the starting part of it. I'm deliberately not starting with the subject. In fact, I wanted to. But what happens that when you start for a particular topic, you should be finishing, you should be able to finish it off. In fact, I've got the lecture scheduled at 6 o'clock immediately, and I won't be able to finish my part of economic, non-economic, and business activities up till that point. So we'll be starting with the chapter in our next lecture that will be on next Wednesday. If the timing change or something, some shuffling is done, we'll be informing you about that. But you have to be very much regular in attendance. क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक का क्लास लेक्चर अगर ठीक से अटेंड कर लिया तो माइंड वेल माय डियर फ्रेंड्स, वो लेक्चर अटेंड करने से तुम्हारा 60% प्रिपरेशन ऑफ द टॉपिक हो जाता है इफ यू आर गुड इनफ इनटू दैट क्लास, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली. तो अपने आप तुमको वो चीज रिकॉग्नाइज, रियलाइज और रिट्राइव होना चालू हो जाती है. But at the same time, your self-study supports it along with that class attendance. And that's why both the things are required hand in hand. ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजनी चाहिए. मैं मेरा पूरा जोर लगाऊंगा, तुम अगर तुम्हारी तरफ से पूरी ताकत लगाओगे, आवाज जोर की आएगी.
All right, we'll meet in the next lecture. We'll be announcing on the group. Thank you for today.